in West Bengal. During the past few days, the Commission visited all the poll-bound states for reviewing the preparedness for the ensuing assembly elections. During these visits, the Commission met all the recognized political parties and received their suggestions. The Commission also met the district electoral officers, the SPs, the IGs, the DIGs, and nodal officers of all the enforcement agencies. The Commission also had meetings with the chief electoral officers, chief secretaries and DGPs of the respective states and union territories. The Commission also facilitated the BLOs for doing an excellent work for the SIR. The Commission also interacted with the young and first-time voters and also our sweep icons who are engaged in voter awareness activities. As all of you are aware, these 5 states and UTs represent distinct geographical and cultural landscapes of India. These elections represent not only a democratic exercise, but also the cultural richness of India and truly reflect the unity and diversity of our nation. Pure electoral rolls are the bedrock of any democracy. With this objective, the special intensive revision is being conducted as per Article 326 of the Constitution to ensure that no illegible elector is left out, while no ineligible person is included in the electoral rolls. I congratulate all the booth level officers, assistant electoral registration officers, electoral registration officers, district election officers, and all election officials who were involved in this work for ensuring its smooth conduct and completion. It has been a massive democratic exercise. Around 17.4 crore electors are going to participate in these elections, an exercise of continental scale and proportionality. To give you a feel of numbers, 17.4 crore electors roughly also comprise the continent of Australia, France, South Africa, Germany, and Canada. We will also see our guests from more than 20 countries from their electoral commissions who will be visiting these elections for witnessing the festive celebrations, the transparent and efficient celebrations of elections in India. The Commission, along with lakhs of election officials and security personnel, is committed for ensuring free, fair, transparent, accessible, and peaceful elections. Election Commission of India is also prepared to welcome each and every voter to their polling stations and provide them with a pleasant and comfortable voting experience. I would also like to make a special appeal to our youth and the first-time voters. My dear friends, you are about to step into one of the most important responsibilities of your life, exercising your democratic right, the right to vote. I urge you to participate enthusiastically in this great democratic exercise and cast your vote with pride, responsibility, and confidence. Your vote is your choice in shaping the future of your state and the nation. Elections in India are the festival
of democracy. Chunav ka parv, hum sab ka garv. This festival of democracy belongs to every citizen, every elector of India. Before announcing the schedule of elections, I would like to present before you a brief PPT which will entail the details of these coming elections. The festival of elections, our pride, is going to be held in the state of Assam, Kerala, Tamil Nadu, West Bengal and the Union Territory of Puducherry. The total electors are 17.4 crores and the assembly constituencies are 824. The number of polling stations is roughly 2.19 lakhs and the electoral machinery would consist of roughly 25 lakh personnel. To give you an overview, the end of term of Assam Assembly is on 20th of May, Kerala 23rd of May, Puducherry 15th of June, Tamil Nadu 10th of May and West Bengal 7th of May. To give you a little overview of the electors, Assam, as per the final list, would be roughly 2.5 crores, Kerala 2.7 crores, Puducherry 9.44 lakhs, Tamil Nadu 5.67 crores, and West Bengal, the final list on 20th February comprises of 6.44 crores, and the learned judges, after their adjudication, whatever supplementary list comes, they shall be added. To give you a feel of the category of our electors, we have more than 100 years of age centenarians in Assam, Kerala, even Puducherry, Tamil Nadu and West Bengal. The 85 plus years of age electors are also good in number. Our Divyang Bhai and Bhai Behan, the first time electors, the electors from 20 to 29 years of age and service electors. These are statistics which will be circulated to you. A total number of 2.18 lakh polling stations shall be set up. Majority of them will be in rural areas. Average per elector is between 750 to 850, less than 900 in any case. The model polling stations will be set up in all the states and UTs, and there will be specially women-managed polling stations. Webcasting shall be 100% in all the polling stations, and there will be Divyang brothers and sisters managed polling stations as well. The electoral exercise in India is one of the largest and most unique exercise in the world. For example, in Assam, the polling teams undertake arduous journey of 50 to 60 kilometers from Majuli via ferry and road, cross Brahmaputra River and finally reach the remote Dhanegana polling station where 248 electors are there and they reach there by tractor in the end. Similarly, in Kerala, Edamalkudi has around 693 electors, a tribal area of Idukki district, where the polling officials reach by completing 30 kilometers of journey through rugged off-road terrain by specified vehicles and followed by 8-kilometer trek by foot. Similarly, in Assam, West Bengal, in Alipurduar district, polling teams trek through the Baksa Tiger Reserve Hills to reach the polling booths of 759 electors. And similarly, in Tamil Nadu, Varasanad Hills, in Teni district, polling officers travel 3 hours across difficult terrain to reach 5 electors. Puducherry also, in its Chidambaram Pillai schools, once
a French colony, was designated model polling stations, which has 2 polling stations of 722 and 651 electors. A total of 25 lakh election officials shall be deployed across 5 states and union territory, out of which 15 lakhs will be polling personnel, 8.5 lakh security personnel, 49,000 micro-observers, 1,444 observers, 40,000 counting officials, 21,000 sector officers, and 15,000 micro-observers for counting as well. The voter awareness campaign has progressed well, the maximum of which came through the special intensive revision enumeration forms. Apart from that, the Election Commission itself, the Chief Electoral Officers and our sweep icons have penetrated deep with the substantial range and depth to reach each and every voter. For EVM awareness, various camps have been organized at the district level and even at the returning officers level to ensure that the transparency, the efficiency and the information dissemination regarding these transparent electronic voting machines reaches the grassroots. The EVM awareness is Assam, Kerala, Puducherry, Tamil Nadu and West Bengal. More than 717 demonstrations centers were set up. Polling stations through mobile distribution vans were set up. People participated in EVM awareness, which is roughly more than 28 lakhs. And people who tried mock polls also, the hands-on on EVMs were more than 25 lakhs. In order to ensure a pleasant voting experience, the Election Commission has issued directions that in every polling stations there shall be provisions for drinking water, toilets, signages, ramps, wheelchairs with volunteers, help desks, voter facilitation centers, sufficient lighting inside the voting compartment with adequate shade shall be there in all the polling stations. Special care shall be taken for all our respected senior citizens and Divyangjan. The polling station shall be on the ground floor. There shall be ramps. They have priority in voting. For seating arrangements, special benches shall be put up. They can also apply for home voting, and sufficient transport facility also will be available to our respected senior citizens and persons with disabilities. During the recent 12 months, the Election Commission of India has taken more than 30 new initiatives to ensure that elections are more transparent. The experience to the electors is much more pleasant, and all the stakeholders get all the necessary information as soon as possible. The first one of them has been the special intensive revision, which ensures, in accordance with Article 326 of the Constitution, that no eligible voter shall be excluded, while at the same time no ineligible person should be included. Amongst the new initiatives, just outside the gate of the polling station, an elector can go, deposit his or her mobile, go and vote inside and come out and collect the mobile and go back. In order to identify the candidate to whom the elector wants to select, there shall be colored photograph of all the candidates on the EVMs. In order to ensure that there are no long queues, not more than 1,200 electors shall be there in any polling station. The candidate booths can be set up just outside 100 meters of the polling station, and the voter information slip will have a clear number mentioning the voter's polling station, its number, and his part and serial number.
Amongst the other new initiatives, one major initiative has been that all the applications of Election Commission of India now are under one app which is applicable on mobile, available on mobile, and it is called as ECI Net. All the necessary information across all the stakeholders is available, whether it is your EPIC card, whether it is your polling station, whether it is about the candidate, whether it is about the affidavits of the candidate, whether it is about the progress of polling which is taking place, or whether it is about counting. There shall be 100% webcasting to ensure transparency in each and every polling station. The presiding officers of every polling station shall input the number of votes cast after every 2 hours to ensure that voting percentages which are being relayed through the media to the public at large is by and large accurate. And at end of the poll, whatever the figures are there in 17C, accordingly the percentage is also displayed without any further delay. All the booth level officers have been given identity cards so that our electors and the households can identify them easily. And since our electoral staff has been working very hard, their remunerations were also increased. ECI Net, as I mentioned, will be containing all the 40 different applications integrated in a seamless manner. In another initiative to enhance transparency, the postal ballots will be counted 2 rounds before the EVMs. Similarly, all the statistics relating to the elections shall be available through ECI Net itself within 72 hours of counting being over. In case of any difference because of typographical errors between 17C, which is given at the polling stations, to all the polling agents who are present, and the EVM count, if there is a difference, the VVPATs of that EVM shall mandatorily be counted. Similarly, after the counting is over, the losing candidate can prefer, after prescribed payment of fee, checking of the EVM along with VVPAT counting. In order to ensure that the entire process is done similarly at all the polling stations, a gigantic training effort has been undertaken by the Election Commission of India by training officers right down to booth level officers by the Commission itself. The booth level agents were also trained, of course the police officers, the DEOs, the communication officers, and this capacity building exercise had been piloted by India International Institute for Democracy and Election Management, IIIDM, which is run by the Election Commission of India. Election Commission of India also trains officers of more than 100 countries concurrently. In order to have a substantial dialogue and engagement with the stakeholders, the Commission adopted a consultative and collaborative approach by which more than 4,700 all-party meetings were held by all the returning officers, DEOs and CEOs of this country. Similarly, the Election Commission of India also invited all the national and state level political parties to have such meetings, and more than 28 such meetings have already taken place. There has been national conference with legal councils and interactions with field level beneficiaries, that is booth level officers, EROs, DEOs during the state visits. There have been other host of new initiatives which have been mentioned here, totaling to number 30. These slides will be there, and the Commission has been extremely proactive, transparent, efficient and consultative in its approach to ensure that the experience of election is much, much more pleasant to our prime stakeholder, that is the elector. Considering that India has been the mother of democracies and the largest of them all, with the most transparent elections taking place, the international idea is now currently being chaired by India. We also held an international conference with more than 70 countries
Next. Where the chief electoral officers from those countries has participated recently. Commission had review visits to all these 5 states/UT and met all the officers, as I had mentioned earlier, including our foot soldiers, that is, our booth level officers. Clear directions have been issued to all the enforcement agencies, nearly 24 of them, that elections in these states and UT shall be inducement-free and violence-free. Directions have been issued to the collectors and the SPs that they have to act with complete impartiality and enforce the rule of law. The observers which will be visiting the states, their details should be made public, and any fake news on social media should be strictly monitored and necessary action taken. Shall we move to the poll shilling announcements now? Next. All 126 assembly constituencies for Assam, the polling shall be just in one phase, and the polling shall take place on 9th of April, Thursday, 2026. The counting shall be on 4th of May. All 140 assembly constituencies of Kerala shall also go for polling on 9th April, that is Thursday, and counting shall be on the same day, that is 4th May 2026. Puducherry also will go along with Assam and Kerala. The date of poll is 9th April and the counting will be 4th of May. Tamil Nadu. Tamil Nadu, all 234 assembly constituencies will go for poll on 23rd of April in one phase, and the counting shall be on the same day for all the 5 states/UT, that is 4th of May 2026. West Bengal. West Bengal, the 294 assembly constituencies, the polling shall be held in 2 phases. In the first phase 152 and the second phase 142. The date of poll shall be 23rd of April and 29th of April. And the counting shall be together for all, that is 4th of May 2026. There will be 8 by-elections also, that is Goa, Gujarat, Karnataka, Maharashtra, Nagaland and Tripura. The name of the constituencies are mentioned here and the reasons, which will be circulated to you. And the schedule would be that the assembly constituencies for Goa, Karnataka, Nagaland and Tripura will be held, the polling will be held on 9th of April, and for the assembly constituencies of Gujarat and Maharashtra on 23rd. The counting shall be on 4th of May for all the cases. Thank you. Now we shall begin with the question answer session. I'll request all of you to introduce yourselves and your organization before you ask the question. तो 5 राज्यों के चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है पश्चिम बंगाल, जहां पर पिछली बार 8 चरणों में चुनाव हुए थे, लेकिन इस बार सिर्फ 2 चरणों में ही यहां पर चुनाव होंगे। तारीख भी जान लीजिए, तारीख है 23 अप्रैल और 29 अप्रैल। 23 अप्रैल को पश्चिम बंगाल के 152 सीटों पर और 29 अप्रैल को पश्चिम बंगाल के 142 सीटों पर वोटिंग होगी। नतीजे आएंगे 4 मई को। बाकी जो 4 राज्य थे सभी में एक चरण में ही वोटिंग होगी और सभी के नतीजे आएंगे 4 मई को। यानी कि 5 राज्यों जहां पर
कुल मिलाकर 824 विधानसभा की सीटें हैं, उन सभी की तारीखों का ऐलान हो गया है और अब के बाद से आदर्श चुनाव संहिता भी अब लागू हो गई है। चुनावी बिगुल फूंका जा चुका है। हमारे साथ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है हमारे मैनेजिंग एडिटर राहुल सिन्हा और साथ ही कुछ खास मेहमान हैं जो पैनलिस्ट के रूप में। तो एक बार फिर से प्रत्युष, मुझे लगता है लोगों को जानकारी दे दें, जो इलेक्शन डेट्स हैं उसमें 9 अप्रैल को असम में 126 सीटों पर वोटिंग होगी और 4 मई को नतीजे आएंगे। इसके अलावा 9 अप्रैल को केरला में भी 140 सीटों पर वोटिंग होगी और उसके नतीजे भी 4 मई को आएंगे। पुडुचेरी में भी 9 अप्रैल को ही वोटिंग है, यानी एक एक चरण में है। तमिलनाडु में 234 सीटों पर 23 अप्रैल को वोटिंग होगी, 4 मई को नतीजे आएंगे। लेकिन सबसे बड़ा चुनाव जो इस वक्त सबकी नजर में है और महत्वपूर्ण चुनाव, वो बंगाल का है। और राम कृपाल जी जब इस मुख्य चुनाव आयुक्त बंगाल के चुनाव को घोषणा कर रहे थे तो एक गहरी सांस छोड़ी उन्होंने और उसके बाद उन्होंने कहा 2 चरणों में इसके मतदान होंगे। इन सब चुनाव में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और मुझे लगता है सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण जो इलेक्शन है वो बंगाल है और ये शायद इलेक्शन कमीशन के लिए भी होगा निश्चित तौर पर। और मुझे आश्चर्य हुआ कि जो 8 चरणों में बंगाल का चुनाव हुआ था उसको इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ 2 चरणों में, यानी 2 डेट में उसको समेट दिया। ये मेरे लिए भी आश्चर्य है। लेकिन एक बात जो पूरा जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश जी ने जो बातें कही, पहली बात तो एक अच्छा लगा कि बहुत शॉर्ट में उन्होंने सारी चीजें बता दी, वरना वो पूरी डिटेलिंग होती थी कि नामांकन का ये वो सारी चीजें डिटेल में आएंगी, लोग पढ़ सकते हैं। बट मुख्य बातें उन्होंने ये बताई और मुझे ये है कि कॉन्फिडेंस बहुत ही, मैं कह रहा हूं कि इलेक्शन चुनाव आयोग का ये आत्मविश्वास कि बंगाल को 2 डेट में समेटेंगे, मैं उम्मीद रखता हूं कि सफलता भी होगी। और जो बंगाल जाना जाता है अब तक जो बदनाम रहा हिंसा के लिए, बाकी चीजों के लिए, मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से इस बार कोई एक अलग माहौल बनेगा। नीरज एक बार इलेक्शन कमीशन से हमारे साथ मौजूद है। नीरज एक बार पूरी डिटेल फिर से बताइए जिस तरीके से इन 5 राज्यों के चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया। देखिए अभी अनाउंस कर दिया गया है 5 राज्यों के चुनाव को और आप देखिए राहुल, तो सबसे जो बड़ा है वो पश्चिम बंगाल में 2 फेज के चुनाव कराए जाने के पीछे जो इलेक्शन कमीशन ने दिया वो सबसे बढ़िया वो रहा। देखिए पिछली अगर आप बात करें तो 8 फेज में कराया और 8 फेज में कराने के पीछे का तर्क यही था कि एक तो कोविड का समय था उस समय और कोविड की वजह से भी बहुत सारी दिक्कतें थी, उसके अलावा जो है हिंसा की भी बहुत सारी वारदातें सामने आ रही थी और उसको आज घटाकर सीधे 2 फेज में कराया है, इलेक्शन कमीशन ने घोषित किया है। ये अपने आप में पश्चिम बंगाल के तमाम वोटरों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चुनाव है राहुल, और कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल के तमाम उन लोगों के लिए भी कि जो काफ़ी लंबे समय से इस बात के लिए सोच रहे थे कि क्या होगा चुनाव में, इलेक्शन कमीशन क्या घोषणा करेगा, इलेक्शन कमीशन की क्या योजना होगी, उन सब बातों को लेकर। जबकि SIR एक ऐसा मुद्दा है जो पिछले 2 महीनों से पश्चिम बंगाल की राजनीति में छाया रहा है और आज भी आप अगर देखें तो SIR का विरोध स्थानीय सरकार लगातार करती रहेगी। ऐसे में पश्चिम बंगाल पर जो सबकी निगाहें थी उसको लेकर इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल स्पष्ट किया है और जो 2 फेज पे इलेक्शन बिल्कुल नीरज सुरेश सारथी जी, आपने पश्चिम बंगाल को बहुत हद तक जमीनी स्तर पर हर बारीकी को जानते हैं, पहचानते हैं। 2 फेज में इलेक्शंस का कराना, पहली बात तो इलेक्शन कमीशन के लिए क्या ये आसान होगा? दूसरा, इस बार की जो क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठाया गया खासतौर से इलेक्शन कमीशन के ऊपर, वो कितना चैलेंजिंग है इस बार बंगाल में चुनाव कराने को लेकर? देखिए 2 फेज में जो इलेक्शन की बात कर रहे हैं, लास्ट ईयर एज और कॉरेस्पॉन्डेंट हैज करेक्टली मेंशन दैट इट इज बिकॉज ऑफ कोविड दैट दे हैव टू डू इट इन 8 राउंड्स, बट दिस टाइम इट इज इन 2 राउंड्स। तो मेरे ख्याल से ये नहीं है एंड इलेक्शन कमीशन इज वेरी एक्टिव ओवर देयर फॉर द लास्ट 3-4 months, 5 months. They are very active, so they are preparing. They have prepared their ground very well, and I don't think that it should be any problem. I mean, to conduct the election in 2 phases. प्रत्युष एक बार मुझे लगता है कि फिर से हमें पूरा एक बार लोगों को बता देना चाहिए कि डेट्स का। हाँ बिल्कुल, शुरुआत असम से करते हैं। असम में 9 अप्रैल एक चरण में चुनाव होंगे, नतीजे 4 मई को आएंगे। केरल की बात कर लें, 9 अप्रैल को एक ही चरण में चुनाव होंगे, नतीजे यहां भी 4 मई को आएंगे। तमिलनाडु में 23 अप्रैल एक ही चरण में चुनाव होंगे, नतीजे यहां भी 4 मई को आएंगे।
पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में वोटिंग होगी, 23 अप्रैल और 29 अप्रैल। 23 अप्रैल को 152 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे और 29 अप्रैल को 142 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे और यहां भी नतीजे 4 मई को आएंगे। ये वही पश्चिम बंगाल है जहां 2021 में 8 चरणों में बहुत लंबा वो चुनाव चला था, क्योंकि वो कोविड का भी दौर था। लेकिन इस बार जो कयास लगा जा रहे थे कि 4 या 2, तो चुनाव आयोग ने साफ कर दिया सिर्फ 2 चरणों में ही पश्चिम बंगाल में चुनाव संपन्न हो जाएगा। और कोलकाता से अन्नम बांशु भी हमारे साथ है, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन अन्नम बांशु एक बार ये बता दीजिए कि ममता बनर्जी ने इलेक्शन के अनाउंसमेंट से ठीक पहले जो घोषणाएं की हैं, एक तो वो घोषणाएं बता दीजिए और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, और दूसरा ये जो 2 चरणों में किया गया इसको लेकर टीएमसी का कोई रिएक्शन देखने को सुनने को मिला अभी तक? देखिए, अभी टीएमसी की तरफ से कोई रिएक्शन अभी तक नहीं आया, मगर इस बार चुनाव चरण कम होगा ये पहले से इन लोगों को, ऑल पॉलिटिकल पार्टी को कुछ अंदाज हो गया था। मगर वो लोग सोचे थे कि 3 दफा 4 दफा होगा, मगर ये 2 चरण में इस बंगाल में चुनाव होने जा रहा है 23 और 29 अप्रैल तक। तो ये डिवाइडेशन हो चुका है अभी तक। और सबसे बड़ी बात है, जो बंगाल की सरकार है तृणमूल कांग्रेस, उन लोगों का सबसे बड़ी मुद्दा है एसआईआर। और चुनाव कमीशन ने अभी बोल दिया थोड़ी देर पहले ही, जो लोग अभी सप्लीमेंट्री लिस्ट अभी भी जारी है, जो एडजुडिकेशन का बारी है, जो जुडिशियल ऑफिसर्स, उन लोगों के करने के बाद जो सप्लीमेंट्री लिस्ट अपलोड होगा वो फिर से इंक्लूड हो जाएगा लिस्ट में। ऐसा अभी तक घोषित किया गया है कमीशन की तरफ से। मगर 2 दफा चुनाव में इन लोगों का प्लान, टीएमसी का खास करके सरकार जो है, उन लोगों का प्लान अभी तक सामने नहीं आया। उन लोग कैसे ये रिएक्ट करेंगे वो भी बात नहीं चला, अभी तक नहीं सामने आया। मगर वो लोग सोचे थे कि ज्यादा दफा होगा तो अच्छा होगा, बहुत उन लोगों को तरफ से सुविधा मिलेगी। मगर ये 2 चरण में चुनाव के बाद कैसे रिएक्ट करेंगे अभी तक वो सामने नहीं आया। और थोड़ी देर बाद ही उन लोगों की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस का कुछ रिएक्शन सामने आ जाएगा, ऐसा हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिला है तृणमूल कांग्रेस की तरफ से। और जो पॉलिटिकल पार्टी है उन लोगों को लेकर सोमवार को इलेक्शन कमीशन की तरफ से बैठक है। सूर्य साथी जी, एक लेकिन यहाँ जो थोड़ा सा सवाल उठ रहा है वो ये कि बंगाल में बार बार बीजेपी की तरफ से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के सवाल उठाए जाते रहे, और ऐसी स्थिति में पिछली बार 8 और इस बार 2, तो क्या बंगाल में जो कानून व्यवस्था है वो इलेक्शन कमीशन को बेहतर लग रही है कि इस स्थिति में है कि 2 में ही करा दें 8 के मुकाबले? ये जो है इसमें मुझे लग रहा है इलेक्शन कमीशन इज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट। आई मीन until and unless they are very much confident, they are very much confident about the law and order situation, they would not take a decision like this. I mean, as our correspondent has correctly mentioned, that it's a knee-jerk reaction. I mean, should be on the TMCs. TMC didn't take it, did not thought of it. मुझे लगता है टीएमसी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ भी गए हैं, एहतशामुल हक साहब। एहतशामुल हक साहब, सबसे पहले तो जो 2 चरणों में बंगाल के चुनाव कराए जा रहे हैं, पहला रिएक्शन आपका क्या है उस पर? लगता है तो शामुल हक तक आवाज नहीं जा पा रही। जी बोलिए। ये जो 2 चरणों में चुनाव की तैयारी हुई है, 2 चरणों में चुनाव होंगे, उसको लेकर के पहला रिएक्शन आपका? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इस हिसाब से अभी जो आज चुनाव का ऐलान हुआ है, इससे पहले हमारे पश्चिम बंगाल में जो 2021 में विधानसभा हुआ था 7 फेज में हुआ है। लेकिन कहीं न कहीं समझिए इस तरह का अभी दिख रहे हैं, ये एक मतलब कोई नई रणनीति है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, जो पश्चिम बंगाल में जितनी बार भी चुनाव हुआ है, जितने बार भी इससे पहले चुनाव हुआ है, तो हम लोगों के यहाँ फेसेज 5 फेज 6 फेज 7 फेज में हुआ है। लेकिन इस बार पता नहीं क्यों, इसलिए इनको सत्ता हासिल करना है, इसलिए बड़े बड़े ख्वाब देख रहे हैं। लेकिन जो भी हो, हम लोग उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, इसलिए कि जनता हमें मैंडेट देगी, जनता का यहाँ जनार्दन है। और हम सबको समझ लिए कि आज जो मसनद में बैठाने वाले हैं हमारे जो यहाँ के वोटर हैं, मैं जो भी हो फेस, हमें उससे आपत्ति नहीं है। हम लोग आने वाले दिनों में जो हमारे यहाँ वोटिंग होगी, हम लोग आने वाले दिनों में फिर से चौथी बार ममता बनर्जी को मसनद पे बैठाएंगे। और तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ता हम लोग तमाम लोग सक्रिय हैं, जितना भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे समझ लिए कि जोड़ लगा ले। यहाँ 2 फेज में ये बहुत ही अफसोस की बात है कि 2 फेज का इलेक्शन। कितने फेज में चाह रहे थे आप? इलेक्शन
हक साहब कितने फेज में चाह रहे थे? 8 फेज में चाह रहे थे क्या आप? इससे पहले नहीं, इससे पहले तो 7 फेज में हुआ। इससे पहले बात समझ लिए, इससे पहले 2021 में 7 फेज में हुआ। तो अभी 7 फेज में कर देते तो फिर आप कहते कि देखिए ज्यादा खींच रहे हैं और इन लोगों को डर है इस बात का कि कहीं एक बार में नतीजे एक साथ में आ जाए। 23 और 29 2 फेज में, इसके पीछे कुछ न कुछ छुपी हुई। चलिए, विजय शर्मा बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। विजय जी, जवाब दीजिए। ये कह रहे हैं इनको नियत पर कुछ शक हो रहा है, सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं कि 2 फेज में क्यों कराए जा रहे हैं, और ज्यादा फेजेस होने चाहिए थे। टीएमसी ने रोना धोना शुरू कर दिया। इनकी तो मांग थी कि इतने फेजों में क्यों कराते हो आप कम। और ये तो चुनाव आयोग को मैं साधुवाद देता हूं, उन्होंने 8.5 लाख सुरक्षा कर्मी लगाए ताकि अच्छे निष्पक्ष चुनाव हो सके। और उनकी खासियत देखिए, चुनाव आयोग ने इनको किंतु परंतु का मौका नहीं दिया, क्योंकि ये हारेंगे तो ठीक रहा, ईवीएम चुनाव आयोग पर फोड़ना, तो उसकी तैयारी पहले कर ली। हर 2 घंटे में बताया जाएगा, चुनाव खत्म होते की वोटिंग खत्म होते के साथ ही वोटिंग परसेंटेज बता दी जाएगी। तो आपको क्या है, और रंगीन फोटो होगा, जो भी कैंडिडेट होगा तो आपको तो स्वागत करना चाहिए। आपके यहाँ कानून व्यवस्था ठीक नहीं थी, वो चुनाव आयोग ठीक कर लेगा। चुनाव आयोग का ये काम है, तो आपको क्या दिक्कत है? राज्य में आप बैठे हो, ये तो इनकी हताशा नजर आती है। इसमें भी बीजेपी का चुनाव आयोग ने चुनाव कराना है, बीजेपी को पर ये किस तरह का वो फोड़ रहे, आरोप लगा रहे। तो इनकी, मैं बड़े जिम्मेवारी के साथ कहना चाहता हूं कि अब की बार टीएमसी की विदाई तय है और बड़े बुरी तरीके से होगी। दोबारा टीएमसी वापस नहीं आएगी। जिस तरह से इन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति की है राज्य में, जिस तरह से वहां लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, जो वहां की जितनी भी मेरी माता बहनें हैं वो असुरक्षित है, कैसे बलात्कारियों को वहां शह दी जाती है, बचाया जाता है, वो राज्य की जनता तैयार बैठी है हिसाब करने के लिए। जिस तरह से घुसपैठियों को बसाया जा रहा है, वहां वोटिंग राइट दिए जा रहे हैं, संसाधनों पर डाका डाला जा रहा है, तो वो टीएमसी वाले तैयार रहे। जिस तरह से नौकरियां बेची जा रही थी, इनकी पहली प्रतिक्रिया बताती है कि ये चुनाव हारने जा रहे हैं। ये मैं सीधी तौर पे बता सकता हूं इसके अंदर, क्योंकि बीजेपी के वहां कार्यकर्ता, आपने देखा होगा कितने लोगों ने शहादत दी है। बंगाल के अंदर इन्होंने किस तरह की खूनी राजनीति खेली है। चलिए ये बातें तो बीजेपी की तरफ से कही जा रही है, लेकिन अभिज्ञान प्रकाश भी हमारे साथ मौजूद है। अभिज्ञान, आपने खासतौर से, बाकी इलेक्शंस की तो हम बात करेंगे, लेकिन चूंकि हर किसी की नजर बंगाल इलेक्शन को लेकर है, 2 फेज में इलेक्शन को कराना, मैंने पहले भी यही सवाल पूछा था। बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के बड़े सवाल खड़े किए जाते रहे और लग रहा था कि कुछ ज्यादा फेजेस देखने को हो सकता है मिले लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, लेकिन 2 फेज में कराने का मतलब आप किस तरीके से देख रहे हैं? नहीं, कुछ पैनलिस्ट ने राहुल ये बात बोली कि ये इलेक्शन कमीशन का सेल्फ कॉन्फिडेंस बताता है, और उनकी इस बात से रामपाल जी ने भी कहा, तो उससे मैं इत्तेफाक रखता हूं, क्योंकि एक बेसिक फंडामेंटल हम लोग सब तजुर्बे के आधार पर जानते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस का मूवमेंट होता है, बहुत मैसिव स्केल पर रीऑर्गेनाइजेशन होता है। तो 9 तारीख के बाद, 9 अप्रैल के बाद जो अगला बड़ा चुनाव होता की तारीख पड़ रही है पोलिंग की, वो 23 अप्रैल है। तो अब आसाम से देखिए कि मान लीजिए आपको बड़ा मूवमेंट कराना है 9 तारीख को चुनाव हो जाने के बाद असम में, पश्चिम बंगाल के एक हिस्से में, तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन ने इसको देखते हुए अपने समय और अपनी जो लॉजिस्टिक्स है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, उन सबका बंदोबस्त अपने हिसाब से किया होगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन भी इस बात से सचेत होगा कि पश्चिम बंगाल पर हिंसा का इतिहास को देखते हुए बहुत बड़े गंभीर कानून व्यवस्था के आरोप लगे हैं। तो उसके लिए पश्चिम बंगाल का शांतिपूर्ण चुनाव कराना एक बहुत बड़ी चुनौती है, जो मेरे हिसाब से चुनाव आयोग समझता है। तो मुझे नहीं लगता कि अंडर प्रिपेयर्ड होगा चुनाव आयोग, ये जानते हुए कि अभिज्ञान, मैं आपसे जो ये सवाल पूछ रहा हूं ना, इसका एंगल थोड़ा राजनीतिक है। हम लंबे वक्त से इलेक्शंस को देखते आ रहे हैं, खासतौर से जब हम इस पर पॉलिटिकल चर्चा करते हैं, राजनीतिक बातें करते हैं, तो उसमें एक पार्टी और खासतौर से जो सत्ता में बैठी पार्टी है उस पर हमेशा ये आरोप लगते हैं। हालांकि चुनाव तो चुनाव आयोग कराता है, लेकिन कहा जाता है कि जब जब कॉन्फिडेंस की कमी होती है तब तब फेजेस बढ़ा दिए जाते हैं, ताकि इसका फायदा राजनीतिक तौर पर अपने को मजबूत करने या फिर जहां कमियां हैं उनको दुरुस्त करने में किया जा सके, एक फेज से दूसरे फेज में पहुंचते हुए।
तो क्या आपको राजनीतिक, अगर मैं तौर पर बात करूं, ये तो ठीक है चुनाव आयोग की तैयारियां होंगी, फोर्सेस पहुंच जाएंगी, सब कुछ होगा, लेकिन क्या ये कॉन्फिडेंस भी आपको दिखाई दे रहा है कि 2 फेज में ही कराना, इसका मतलब? नहीं, ये कॉन्फिडेंस तो नेचुरल है कि ये ममता बनर्जी का कॉन्फिडेंस नहीं है, ये तो दूसरे तरफ का कॉन्फिडेंस। मैं बिल्कुल वही बिल्कुल बेहतर करेंगे, ये बिल्कुल सही कहा राहुल आपने, और यही पॉइंट है क्योंकि भाई पहले हम सब जानते हैं जब एक समय था कि पोल्स जो है वो अलाउड होती थी चुनाव के बीच में, उसके बाद उन पर बैन लग गया, तो चुनाव फेज दर फेज सब अपने चुनाव को ठीक करने की कोशिश करते थे, देखते हुए कि भाई क्या आकलन निकल के आया। आज के समय में सब लोग इंटरनल पोल्स कराते हैं, देखते हुए कि इस फेज में कैसा हुआ, क्या अगले फेज में हमें कहाँ इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। तो ये कोर्स करेक्शन तो राजनीतिक दल करते हैं क्योंकि वो राजनीति कर रहे हैं, राजनीति इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको चुनाव जीतना है। तो ये एडवांटेज पॉइंट तो फिर बीजेपी के लिए हुआ कि अगर 2 फेज है, टाइटर इलेक्शन है, तो जो आपका राजनीतिक सवाल है वो फिर बीजेपी के कॉन्फिडेंस को दिखाता है, वो ममता बनर्जी के कॉन्फिडेंस की तरफ नहीं जाएगा। जी, हमारे साथ और भी मेहमान हैं। हमारे साथ श्री कृष्णा सर भी हैं, आशीष रंजन जी भी हैं जो कि सेफोलॉजिस्ट हैं। आशीष रंजन जी, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया, ठीक है, टीएमसी आपत्ति दर्ज कराएगी कि इतने चरण में कम में कैसे संभव है, लेकिन जो पिछले चुनाव में जो स्थितियां थी, कोविड था, सब कुछ था, बीजेपी ने अपने स्ट्राइक रेट जबरदस्त तरीके से बेहतर की, 3 से सीधे 77। ममता बनर्जी बेहतर की, 213 सीटों पर आ गई, वो भी पिछले के मुकाबले बेहतर। इस बार आपको लग रहा है कि समीकरण कुछ इधर से उधर होंगे, कांग्रेस लेफ्ट साथ लड़ेगी या फिर से अलग अलग लड़ेगी, क्या आपको दिख रहा है? देखिए, धन्यवाद। पहली जो बड़ी चीज़ है, वेस्ट बंगाल से ही शुरुआत किया था। 2 चीज़ें हमें देखना पड़ेगा। ऐतिहासिक तौर पे देखिए तो वेस्ट बंगाल में चुनाव 2 तरफे रहे हैं। फर्क यही हुआ है पिछले 7-8 सालों में, खासकर 2018 के पंचायत चुनावों के बाद, वो ये कि जो बेस लेफ्ट के पास हुआ करता था उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा बीजेपी के तरफ आ गया, यानी कि जो वाम था वो बेसिकली राम बन गए। और आप जब देखेंगे 2019 के चुनाव में भी कमोबेश तकरीबन 3-4% वोट शेयर का गैप था, लेकिन 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी कम 2019 के शेयर के आसपास भी थी, 39 था, 38% उनको वोट मिला विधानसभा में, लेकिन टीएमसी अपना वोट काफी जंप करा ली थी और गैप जो था वो 10% था। इस गैप को थोड़ा सा और अंदरूनी तरीके से देखिए। अगर वेस्ट बंगाल को अलग अलग रीजन में बांटा जाए तो बेसिकली जो ग्रेटर कोलकाता है और उसके नीचे का जो एरिया है आप सेंट्रल बंगाल, ये 2 रीजन में जो गैप था वो मैसिव था, 15% के आसपास था बीजेपी और टीएमसी के बीच में। लेकिन जो वही मेदिनीपुर वाला इलाका जो शुभेंदु अधिकारी का इलाका है या नॉर्थ बंगाल का जो इलाका था, वहाँ पे जो दोनों का कंपटीशन था वो काफ़ी क्लोज था, 2-3% की 3% की मार्जिन थी। तो अब बीजेपी का जो असली गेम है वो ये है कि ये जो टीएमसी का गढ़ वाला जो एरिया है उसमें वो कितना अपने आप को बढ़ा सकती है, तो ये थोड़ा हमें देखना पड़ेगा। दूसरी बात जो आपने लेफ्ट और कांग्रेस की बात कहे है वो बिल्कुल हाशिए पे चले गए हैं। अभी वो अलायंस आज के डेट में तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कांग्रेस भी कहती है कि हम सारा सीट लड़ेंगे और वो नहीं। अगर अलायंस बनती है या नहीं भी बनती है, किसी भी कंडीशन में मेरी जो अपनी राय है उसमें ये है कि कमोवेश वेस्ट बंगाल में इस बार भी 2 तरफा ही मुकाबले होंगे और वो टीएमसी वर्सेस बीजेपी के बीच की लड़ाई होगी। यानी कुल मिलाकर लड़ाई बीजेपी और टीएमसी के बीच में भी है। श्री कृष्णा सर भी हमारे साथ हैं। श्री कृष्णा सर, क्या लग रही है स्थिति इस बार? आप पहले बंगाल के बारे में जरा आप बताएं। ठीक है, बंगाल मैं तो यही कहूँगा कि एक पहले शुरुआत ये करते हैं कि 2 फेज में इलेक्शन है इस बार। माने एक तरफ से अच्छा है क्योंकि पिछले बार आपने देखा कि एक इलेक्ट्रल वो फटीग आ गया था, वोटर फटीग जो 8 फेज में रखा था वो इलेक्शन के लिए। कोविड भी था सर, ये नहीं, कोविड तो था, साथ में एक फटीग हो जाता है, आदमी थक जाता है। भाई 8 फेज आप कितने दिन वेट करते रहेंगे। आप 2 फेज में खत्म हो गया तो बस ठीक है, लोग ये भी कहेंगे अच्छा यार खत्म हो गया, चलो चुनाव अच्छा। जो वोटर है एक तो वो है, दूसरा ये हो सकता है इसमें फेवर शायद थोड़ा भाजपा के फेवर में भी जा सकता है, हो सकता है, क्योंकि एकदम से तुरंत 2 फेज एक साथ हो रहा है। तो शायद जो कई पहले जब इतने फेज में रखा था 8 फेज में,
तब लोगों को सोच विचार था कि भाई ये कल इनको कर दे, अगले बार इधर कर दें। अब 2 फेज में खत्म हो जाएगा, लोग एकदम से तय कर लेंगे भाई इसको करना है या उसको करना है। फिर भी मेरे को लगता है थोड़ा अभी भी फिर भी टीएमसी का भी थोड़ा पलड़ा भार है। दे स्टिल हैव अ फेवर कि अभी भी इतने खिलाफ नहीं है वहाँ पे, मैंने इतना एंटी नहीं हुआ है जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो शायद इसमें ये दोनों में बैलेंस हो सकता है। एक चीज अगर ऐड कर सकूं, पिछली बार 26 फरवरी को चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी थी और 2 मई को रिजल्ट था। इस बार 15 मार्च को है। तो जो सर अभी इलेक्शन फैटिग की बात कर रहे थे, तो वो भी जो एक टेन्योर था लंबा चौड़ा करीब 2 महीने के आसपास का, वो भी कम हो गया। करीब 45 दिनों में मामला निपट जाएगा। जी जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 5 राज्यों का चुनाव सिर्फ 5 दिन मतदान होंगे। ये बहुत बड़ी बात है। सारी डेट 5 डेट है, यानी 5 राज्यों का चुनाव 5 तारीखों में खत्म किया जा रहा है। अब रही बंगाल, जो बंगाल पर बात कर रहे थे, देखिए फायदा किस पार्टी को हो नहीं हो तो 4 तारीख को 4 बजे के बाद क्लियर हो जाएगा। लेकिन लोकतंत्र को फायदा इस मामले में हो रहा है कि देखिए बंगाल में आप देखिए जितना ही डिसेंट्रलाइज करते हैं, हमेशा ये रहा है, चाहे वो पंचायतों का चुनाव हो, चाहे वो हिंसा वहाँ बहुत ज़्यादा होती थी। अब क्या हो गया है, जैसा अभिज्ञान जी भी कह रहे थे कि आप ये देखें 9 अप्रैल को 3 राज्य करीब करीब समाप्त हो जाएंगे यहाँ। उसके बाद बचेगा कौन? 23 तारीख को सिर्फ तमिलनाडु में फर्स्ट फेज की पोलिंग होगी। ओह तो सॉरी, तमिलनाडु में एक ही दिन है, और बंगाल में 152 सीटों पर। यानी आपके पास सेंट्रल फोर्सेस और तमाम इतने पर्याप्त मात्रा में रहेंगे, पर्याप्त संख्या में रहेंगे कि आप एक अच्छी तरह से एक जिसको कहते हैं सही मायने में लोकतंत्र और वोट का अधिकार। बंगाल में सबसे ज्यादा डर जिसकी होती थी, वोटर बूथ तक पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है। मैं समझता हूं कि पूरे देश में ऑलरेडी 9 तारीख को समाप्त